वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी विथ PKQ&A में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 18 का पार्ट 2। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाई सी ट्रीटी और बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज it deals only with those part of oceans that are outside the national jurisdiction of our country. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is it aims to capacity building and transfer of marine technologies to developing countries. Yes, it's also correct. Next, high seas treaty is not yet in force. Is it true? Yes, it's also correct. So answer for this question is, यहाँ पे क्या पूछा है? Correct. So answer is option number D, which is all of the above. It means statement 1, 2 and 3 are correct. Okay, so let's come to the next question, which is in the context of invasive species in India, which of the following considered the invasive species? इसमें से कौन सा invasive species है? Okay, first is Prosopis julifera. Yes, it's a invasive species. Next is Lantara camera, ये भी है. Next is African catfish. This is also invasive species. And if I are talking about the sociable lapwing, it's a migratory bird. Okay, it's a migratory bird, not a invasive species. So answer for this question is option number C. 1, 2, 3 only are correct. Okay, statement 4 are not correct. And if we're talking about the invasive species like Lantara camara, okay, which means a thorny shrub from Central and South Africa, highly invasive in Indian forest, like disturbing native plants. इंडिया का जो नेटिव प्लांट्स है उसको डिस्टर्ब कर रहा है. ओके, सो दिस वन इज. नेक्स्ट इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी another one, it is which is Prosopis julifera, which is Prosopis julifera की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है? विलायती बबूल भी इसको बोला जाता है. क्या बोला जाता है? तो विलायती बबूल भी नेटिव लैंग्वेज में इंडिया में बोला जाता है. और ये इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर सॉइल कंजर्वेशन, बट दिस हार्डली ट्री आउट कंप्लीट नेटिव स्पेसीज स्पेशली इन एरिड रीजन. बट उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वहाँ का एरिड रीजन का जो स्पेसीज था उसको हार्म पहुँचा रहा है. एंड अनदर वन इज अफ्रीकन कैटफिश. इट्स ऑल्सो अ invasive wildlife in India, also dominated by certain species of fish. और ये किस पे डोमिनेट करता है? तो फिश पे. ओके, एंड अगर हम अदर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेजिव स्पेसीज के बारे में जानते हैं, लाइक पार्थेनियम हाइड्रोस्फोरस, विच जिसको हम लोग कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, जो कि ओरिजिनली अमेरिका में था, बट इट काउजेस एलर्जी एंड कम्पीट्स विथ नेटिव प्लांट्स. एंड अनदर वन इज इथ्रोनिया क्रैसिप्स, जिसको वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं. ये भी एक्वेटिक प्लांट है फ्रॉम साउथ अमेरिका दैट clogs water bodies affecting aquatic biodiversity and water flow. And another one is Leucaena leucocephala, जिसको सुबाबुल भी बोलते हैं, जो कि फास्ट ग्रोइंग ट्री है दैट इन्वेड्स पास्चर्स एंड एग्रीकल्चर लैंड्स. अनदर वन रिड्यूस करता है फर्टिलिटी. अनदर वन इज मिनट डॉकवीड. एंड अदर वन इज alligator weed and giant African snail and cotton mallee bug and primrose willow. ये सब invasive species है. Okay, next is, so answer is option number C. Let's come to the next question, which is with reference to the environment and ecology, consider the following statements regarding the adaptation. adaptation means किसी भी environment को adapt कर लेना. ओके, ये किसी चीज़ को अडाप्ट कर लेना. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, और देयर इज आस्किंग अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट. इट इज़ एन एट्रीब्यूट of the organism that enables the organism to survive
and reproduce in its habitat? Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number A, only one is correct. And if you're talking about this one, it does not involve herb बिहेवियरल चेंज इन इसमें बिहेवियरल चेंज होता है, ओके, तभी तो किसी चीज़ को अडॉप्ट करेगा, नहीं तो फिर कैसे होगा. सो स्टेटमेंट थर्ड इज सॉरी स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विच इज, और इसमें क्या पूछा है तो करेक्टली मैच पेयर पूछा है, ओके. सो फर्स्ट इज स्वास विच इज ये क्रैकर्स है एंड ये फीचर्स है उसके. यूजेस वाटर वेपर टू सप्रेस डस्ट. यस, इट्स अ करेक्टली मैच. नेक्स्ट इज स्टार, फोकस ऑन रिड्यूसिंग साउंड इंटेंसिटी. करेक्ट. सफल, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस particulate matter emissions. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. All three are correct. And if we're talking about the important ones, which is SWAS, its full form is Safe Water Researchers. And if you're talking about the STARS full form, which is Safe Thermite Crackers. And if you're talking about the another one, which is SAFAL, which मिनिमल एल्यूमिनियम, ओके. और ये किसके लिए है तो मिनिमाइज करेगा एल्यूमिनियम को, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following pairs which is refer to sacred groups and states. So first is Than in Assam. Is it true? Yes, it's correctly matched. Next is Kaus in Tamil Nadu. No, it's not in Tamil Nadu, it's in Kerala, okay. So second statement is incorrect. Next is Devkaru, which in Karnataka. Yes, it's a correct answer. So answer for this question is option number C. 1 and 3 only are correct. And if you are talking about this, some other important different names of the different state sacred groups. So for example, अगर हम बात करते हैं some other name which is अगर हम बात करते हैं तो पहला हो जाएगा हमारा विच इज़ सरना. सरना कहाँ पे हो जाएगा? बिहार में. देन देव वन इन हिमाचल प्रदेश. देवरा काडू इन कर्नाटका. कावुस इन केरला. देव इन मध्य प्रदेश. देवरा हाथी और देवराई in Maharashtra. And Lai Umang in Manipur. Lao Kyangtang or Asong Konsi in Meghalaya. And Oran in Rajasthan. And Kovil Kadu or Sarp Kaus in Tamil Nadu, okay, or third Assam. So let's come to the next question, which is which of the following, with reference to the lion conservation, consider the following statement. So first is World Lion Day is initiative of the International Big Cat Alliance. Is it true? No, it's not a correct statement because World Lion Day is initiated by Big Cat Rescue. Big Cat Rescue के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है. सो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज ग्रेट गियर कॉन्सेप्ट इज अ लायन कंजर्वेशन इनिशिएटिव एम्ड एट द एक्सपैंडिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर एशियाटिक लायन. Is it true? So yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B. Only 2 is the correct. Okay, let's come to the next question, which is Wang 19 intercontinental ballistic missile, which is recently seen in the news, belong to which of the following nation. ये किस nation से belong करता है? तो हो जाएगा नॉर्थ कोरिया. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज नॉर्थ कोरिया. वांग सोंग 19 इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म हैबिटेट. हैबिटेट मतलब जहाँ पे आप रह सकते हैं, काइंड ऑफ अ प्लेस विच इज़ फेवरेबल. ओके, सो फर्स्ट इज कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इंटरैक्टिंग with each other. No. Flora and fauna of a geographical area. No. Biome that consists of large regions dominated by similar type of ecosystem. No. Another one is which is
a place where particular species live and grows. Yes, option number D is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is which of the following best describe the agrivoltaic farming recently seen in news? So first statement is the practice of alternating seasonal crop cultivation to preserve soil fertility. Is it true? No. This one is wrong. The another one is the integration of solar energy production with the traditional agricultural activities on the same land. Yes, option number B is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the bamboo in India. Okay, first statement is bamboo is classified as a tree. No, it's not as a tree, it's a grass. Okay, पहले ये ट्री में था, बाद में इसको ग्रास के कैटेगरी में ये कर दिया गया. ओके, सो नेक्स्ट वन इज बैम्बू प्लांट आर लॉन्ग लिव्ड एंड take decades to mature fully. Is it true? No, it's not a correct statement because the bamboo is actually one of the fastest growing plant in the world, and certain bamboo species can grow up to 3 feet in a single day under optimal conditions, and most species reach full maturity within 3 to 5 years. Okay, so this one is statement second is incorrect. Next is Madhya Pradesh is the highest bamboo cover in India. Is it true? Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number A, only one is correct. Okay, and if you're talking about Indian Forest Act 1927 no longer classified as a tree, और ये जो ट्री का कैटेगरी से हटाया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से किया गया. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following pairs. There is animal and highest population state in duties. कहाँ पे है highest population इसका? ओके, so first is the tiger which is the highest in Madhya Pradesh. Yes, it's a correct statement. Next is elephant in Kerala. No, it's in Karnataka. Okay, so statement second is incorrectly matched. Next is leopard in Maharashtra. Is it true? नो, लेपर्ड कहाँ पे हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में. एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट स्नो लेपर्ड, सो विच वर फाउंड इन द लद्दाख, नॉट इन उत्तराखंड. ओके, so statement fourth is also incorrectly matched. So answer for this question is option number A, only one is correct. Okay, let's come to the next question, which is recently Sri Lankan golden backed frog has been rediscovered after 200 years in India. In this protected area, it is only sanctuary in Andhra Pradesh known as harboring Asian elephants. It lies to Kuppam and Palmaner range. Kaigal tributary of the Palar river flows through it. So which of the following protected area is being described in the passage? So answer for this question is it's option number D, which is कोंदियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, सो जो कि कहाँ है? तो कोंदियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन Palan river flows through it and Palmer range. ओके, एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में. नेक्स्ट वर्ज इज काम्बल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आंध्र प्रदेश में. देन श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पे हो जाएगा? सो आंध्र प्रदेश में. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, एंड दिस वन इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज which of the following statement about the first Asian Buddhist Summit is correct? Okay, so first, it was organized by the Ministry of Culture and the International Buddhist Conference. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is the theme of the summit was role of Buddha Dhamma is in strengthening Asia. Yes, it's a correct. Next is summit was held in Bodh Gaya
in India? No, it's not in Bodh Gaya. It's कहाँ पे हुआ था तो न्यू दिल्ली में. Okay, so statement third is incorrect. So answer for this question is option number B. Only 1 and 2 is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is which of the following statements accurately describe the aim of the PM Vidya Lakshmi scheme? So first statement is to provide financial support to meritorious student for pursuing higher education without the need for collateral or guarantor. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number A is the correct answer for this question. Okay, and if we're talking about the तो उसमें कितना उन लोगों को सपोर्ट मिलता है तो मैक्सिमम 10 लाख का दिया जाता है कवर फॉर ट्यूशन फी एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस. एंड ये किसको मिलेगा तो जिसका 8 लाख से कम इनकम होगा एनुअली. एंड और उसको नहीं मिलेगा जो कि हु डू नॉट qualify for other government scholarship can receive a 3% interest subsidy on loans during the moratorium period. Okay, so next question is consider the following statements regarding the महाकुंभ मेला. Okay, महाकुंभ मेला के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो फर्स्ट इज महाकुंभ इज सेलिब्रेटेड वंस इन अ 12 ईयर. नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. वो कितना 144 ईयर में आता है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज इट इज नॉर्मली हेल्ड इन देवप्रयाग. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ये अगर हम बात करते हैं कुंभ मेला के बारे में, कुंभ मेला इज लिंक्ड विद द मैथोलॉजिकल इवेंट जिसको समुद्र मंथन बोलते हैं, वहाँ से इसका ओरिजिन है. और चर्निंग ऑफ द ओशन बाय गॉड्स एंड डेमन्स. while doing this they wanted to get hold the amrit, nectar of the immorality. एंड दिस प्रोसेस इसके ड्यूरेशन में क्या हुआ 4 ड्रॉप गिर गया 4 जगह पे. और वो कौन कौन सा जगह था तो एक ड्रॉप प्रयागराज में, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा उज्जैन एंड चौथा नासिक. ओके, 4 प्लेस में ये गिरा था जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है. ओके, एंड कुंभ मेला 3 टाइप का होता है. पहला होता है महाकुंभ जो कि 144 ईयर में लगता है. दूसरा होता है पूर्ण कुंभ जिसको जो कि 12 ईयर्स में लगता है. एंड 6 ईयर में लगता है, उसको अर्ध कुंभ बोलते हैं. ओके, एंड अगर अर्ध कुंभ की बात करते हैं तो वो हरिद्वार प्रयागराज में लगता है. और महाकुंभ प्रयागराज में ही लगता है जिसको देवप्रयाग इस वर. और उस जगह को क्या बोलते हैं देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी आके मीट करती है और उसके बाद गंगा में जाके मिल जाती है. ओके, सो और ये कहाँ पे है तो उत्तराखंड में. So answer for this question is option number D. Neither 1 neither 2 is the correct answer. Let's come to the next question, which is consider the following statements about the people's biodiversity registered. So first statement is the people's biodiversity registered is mandate under the Biological Diversity Act 2002. Yes, it's a correct statement. Next is the primary object of the PBR is not catalog local flora, fauna, traditional knowledge and local communities. Correct. Next is biodiversity management committee are responsible for preparing and maintaining the PBR at the local level. It's also correct. So answer for this question is option number C. All 3 are correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following best describes the primary objective of India's first analog space mission recently launched by the ISRO in कहाँ पे लेह में. Okay, so first statement is to study new radiation shielding material for a space environment. Is it true? No, it's not a correct statement. Next is to simulate terrestrial life and assess human survival in a space-like condition. Yes, it's a correct. So answer for this question is option number B is the correct answer for this question. Next is how many of the following committees are related to the conservation and management of
वेस्टर्न घाट. ओके, सो फर्स्ट इज कस्तूरी रंगन गढ़गिल, दोनों रिलेटेड है वेस्टर्न घाट से. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द भूरेलाल कमेटी, ये इससे रिलेटेड नहीं है. और भूरेलाल कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? सो इट इज़ रिलेटेड टू द, ये इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑफ इंडिया अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टू ओवरसीज एंड इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स. एंड इसका एम क्या था? एट रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन एंड सेफ गार्डिंग इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स. ओके, so this is not related to western घाट. and if you are talking about the गढ़गिल कमेटी, जो कि 2010 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, also referred to the western ghat ecology expert panel. But this committee had recommended that entire western ghat as an ecological sensitive zone with more stringent environmental protection measures. Okay, ये पूरा गढ़गिल कमेटी जो था वो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट को इकोनॉमिकल जोन इसको डिक्लेयर कर सेंसिटिव इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का प्रस्ताव दिया था. बट कस्तूरी रंगन कमेटी जो था 2012 में आया हुआ, वो कितना परसेंट बोला था? तो वो 37% ओनली को प्रपोज करने बोला था कितने स्पेशल इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन. ओके, so answer for this question is option number B, only 2 is the correct. Let's come to the next question, which is with reference to ecosystem diversity, consider the following statement. First is coral reefs are among the most diverse and productive ecosystem on earth. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is boreal forest ecosystem have higher biodiversity than tropical ecosystem. Is it true? No, it's not a correct statement, because the boreal forest ecosystem have lower biodiversity than tropical. Okay, ये रिवर्स कर दिया. बोरियल में किस में ज़्यादा है? तो लोअर बायोडाइवर्सिटी दैन ट्रॉपिकल लेवल. ट्रॉपिकल में कम ज़्यादा है एंड बोरियल में कम है. ओके, सो statement second is incorrect. So answer for this question is option number A, only 1 is correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to water spinach, consider the following statements. So first statement is water spinach is a herbaceous aquatic or semi-aquatic perennial plant. Yes, it's a correct statement. Next is it is native to temperate region. No, it's not native to temperate region. It's native to the, ये किससे हो जाएगा? तो ये नेटिव हो जाएगा ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज water spinach is rich in protein and vitamins. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, only 2 is correct answer for this question. Let's come to the next question, which is with reference to the IUCN Red List, consider the following statement, which is first is IUCN Red List is a global indicator for monitoring the conservation status of animal and plant species. Yes, it's a correct statement. Next is IUCN Red List assessment are revised annually for all species listed across the globe. Is it true? No, it's not a correct statement, because if you are talking about the IUCN Red List assessment, ये हर साल नहीं किया जाता है पहली बात तो. एंड इसके अलावा the assessment frequently depend on available resources, priorities and threat level faced by each species. Updated are done periodically for many species but not every years for all species globally. Okay, so second statement is incorrect. Next is the red list include assessment for the both animal and plant species but not for fungi and other non-plant species. No, it's not a correct statement, because ये एनिमल एंड प्लांट स्पेसीज के लिए तो करता ही है, बट ऑल्सो फॉर द फंगी एंड अदर नॉन प्लांट ऑर्गेनिज्म. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 is correct. Let's come to the next question, which is the recent World Cities Report 2024 released during the 12th session of the World
World Urban Forum highlights the severe challenges cities face due to the climate change and rapid urbanization. So, first is which of the following organization released the World Cities Report 2024? So, first is World Bank. No, it's released by the United Nation Habitat, UN Habitat. Okay, so answer is option number B is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is with reference to Ganges river dolphins. Ganges river dolphins, consider the following statement. First is Ganga river dolphins relied on the ultrasonic sound waves for hunting due to their blindness. Yes, it's a correct statement. Next is they are indicated species of freshwater ecosystem. It's also correct. Next is the Ganga and Indus dolphin are living fossil fuels. No, it's not a correct statement, because if we're talking about the Ganga and river dolphins, it's ये डिस्कवर्ड कब किया गया था ना 1801 में, जिसको लिविंग फॉसिल फ्यूल एज दे आर मोस्ट एंशियंट डॉल्फिन स्पेसीज still alive until recently. The Ganga and Indus dolphin were considered two subspecies of the South Asian river dolphin species, and the taxonomy was revised किया था 2021 में, so that the Ganga and Indus river dolphin are recognized as separate species. Okay, सो और ये कौन, अगर हम गंगा रिवर डॉल्फिन के IUCN स्टेटस की बात करते हैं तो वो किस में हो जाएगा, इंडेंजर. ओके, और डॉल्फिन हमारा क्या है, तो वो हो जाएगा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया का. एंड डॉल्फिन फ्रेश वाटर में मिलता है ओनली. एंड अगर हम बात करते हैं इसको, डॉल्फिन को और क्या नाम से जाना जाता है, तो टाइगर ऑफ द गंगाज भी बोला जाता है. ओके, so the answer for this question is option number B. Only 2 is the correct. Let's come to the next question, which is with reference to the Conference of Parties COP Convention for Biodiversity CBD. Consider the following statements. So first statement is COP 16 of 2024 is held in Colombian cities of Cali and has a theme of peace with nature. It's a correct statement. Next is the 30-30 target are outcome of the Cunningham Montreal Global Biodiversity Framework adopted at COP 15. Yes, so answer for this question is option number C. Both 1 and 2 is the correct answer for this question. Next is recently European Union signed a security and defense partnership agreement with an Asian nation for the first time, aiming to strengthen cooperation in cybersecurity, military exercises, and space security. Which of the following Asian nation is discussed in the above paragraph? So answer for this question is option number C, which is Japan. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the ESA Proba 3 mission recently seen in the news. So first is it aims to study the sun's outer atmosphere by creating an artificial eclipse. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is the mission will be launched from the French Guiana by the Ariane 5 launch vehicles. Is it true? No, it's not a correct statement, because if we're talking about the launch vehicle, the mission will be launched abroad India's Polar Satellite Launch Vehicle PSLV, making a notable example for international collaboration in space research. This differs from the commonly used Ariane's 5 launch vehicle for ESA missions, which is based on French Guiana. Okay, so statement second is incorrect. So answer for this question is option number A only is correct. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the Indian rhinos. Okay, so first statement is they are endemic to India. नो, इट्स नॉट एंडेमिक टू इंडिया. ये इंडिया के साथ साथ और नेपाल में भी पाया जाता है. ओके, नेपाल. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज फीमेल इंडियन राइनोसेरस हैव नो हॉर्न्स. नो, इट्स उन लोग के पास भी, चाहे वो फीमेल हो
चाहे मेल, दोनों के पास भी हॉर्न होता है. सो स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज दे लिव इन अ ग्रुप बाय ओल्डेस्ट मेल. इज इट ट्रू? No, it's not a correct statement, because if we are talking about the livings of the Indian rhinoceros are generally solitary animals. They are mostly solitary except for temporary grouping in grazing areas or during the mating season. Okay, females may be accompanied by their calves, but adult males do not lead groups, and males establish and defend their territories but do not form social hierarchy or lead herds. Okay, so answer for this question is option number D. None of the above is correct. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding Poivitra Wildlife Sanctuary. First is it has the highest density of greater one horned rhinoceros. So first statement is it true? Yes, it's a correct statement. और पोइवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड कहाँ है? तो असम में. ओके, so first statement is correct. It is identified as an important bird area by the Bird Life International. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is most of the area of the sanctuary is dominated by evergreen forest. No, it's not a correct statement, because Indian rhinoceros most of the areas of sanctuary dominated by evergreen forest. No, it's not a correct statement, because ये किससे हो जाए? grasslands and wetlands rather than evergreen forest. Okay, so statement third is incorrect. So answer for this question is option number A, which is 1 and 2 is correct answer for this question. एंड अगर हम बात करते हैं ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस की, तो पोइवित्रा तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है, बट अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में. ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि वो भी कहाँ सिचुएटेड है? तो असम में. बट डेंसिटी अगर पूछा जाए, पोइवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे कम एरिया में ज़्यादा राइनोसेरस है. ओके, बट अगर ऐसे ही पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो काजीरंगा में. So let's come to the next question, which is this ecosystem makes up about 1/5 of the surface of the earth and occur where rainfall is less than 50 centimeter. Major regions are Africa, South America, some areas of North America and Australian. The soil in the ecosystem is coarse. In this ecosystem, days are very hot and nights are very cold. So plant and animals are exposed to both type of extremes. So answer for this question is ये पैराग्राफ किसको डिस्क्राइब करते हैं? डेजर्ट इकोसिस्टम को. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑर्फन ड्रग्स. ओके, ऑर्फन ड्रग्स किसको बोलते हैं? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑर्फन ड्रग्स आर मेडिकेशंस डेवलप्ड स्पेशली to treat rare disease known as orphan disease. Yes, it's a correct statement. Next is treatment for any type of cancer or not covered under orphan drugs. Is it true? No, it's not a correct statement, because इसमें से टाइप हो जाएगा डिजीज का, तो जेनेटिकली डिसऑर्डर्स, रेयर कैंसर लाइक न्यूरोब्लास्टोमा एंड ग्लाइमोस, ये रेयर कैंसर के कैटेगरी में आता है, तो ये सब भी होता है, बट एनी या फिर कोई सा भी नहीं होगा. एंड अनदर वन इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, दिस अनदर वन इज ऑटोम्यून डिजीज. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज करेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज consider the following nations, like how many of the above nation presently not part of the Belt and Road Initiative. BRI ये किसका इनिशिएटिव है? तो चाइना का इनिशिएटिव है. ओके, एंड इसमें कौन सा पार्ट नहीं है? ओके, सो फर्स्ट इज ब्राज़ील, इसका पार्ट है. नेक्स्ट इज चाइना नहीं है, कनाडा भी नहीं है, साउथ अफ्रीका भी. ओके, सो आंसर हो जाएगा, यहाँ क्या पूछा है? नॉट अ पार्ट, सो दो गो नहीं है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज
Consider the following statements regarding the eutrophication. Eutrophication. So first is eutrophication is primarily caused by the excessive input of nutrients, especially nitrogen and phosphorus, into water bodies. So first is correct statement. Next is the algal blooms resulting from eutrophication can produce toxins harmful to aquatic life and humans. It's also correct. So answer is option number C, which is both is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following pairs. National parks and rivers. So first is Ranthambore, Yamuna. No, it's not correctly matched because रणथंबोर किस रिवर से है, तो वो हो जाएगा चंबल रिवर से। ओके, रणथंबोर चंबल रिवर कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट इज माधव, जो कि सिंध रिवर में हो जाएगा, फ्लोज अक्रॉस द ईस्टर्न बॉर्डर सिंध में। ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज ओरांग नेशनल पार्क, जो कि धनश्री रिवर में है और ये कहाँ पे है, असम में, जिसको हम लोग मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। ओके, मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। ओके, so answer for this question is option number C. Only 3 is correctly matched. Let's come to the next question, which is with reference to the red sanders, consider the following statements. So first statement is it is endemic to Nilgiri forest range, Tamil Nadu and Kerala. No, it's not a correct statement because if you are talking about the red sanders, which is जिसको टेरो कार्पुसेंटलियस भी बोला जाता है, और जो कि इंडेमिक टू द फॉरेस्ट एंड शेषाचलम्स, वेलीगोंडा एंड लानकमला एंड पालकोंडा हिल रेंजेस इन आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज it is highly valued and revered in East Asia due to its hard and durable woods. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is the presence of red dye santalline imparts its characteristic red color. It's also correct. So answer for this question is option number B. Only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the Chief Wildlife Warden in India. First statement is Chief Wildlife Warden is a statutory authority established by the Forest Conservation Act 1980. Is it true? No, it's not a correct statement because the Chief Wildlife Warden is a statutory authority established under the Wildlife Protection Act 1970. Okay, Wildlife Protection Act 1970 के अकॉर्डिंग बना, सॉरी 1972 के अकॉर्डिंग बना है, नॉट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. ओके, सो and if we're talking about the forest conservation act 1980 is focused on the conservation of forest and preventing deforestation. okay, फॉरेस्ट को कंजर्व करना और डिफॉरेस्टेशन से उसको रोकना, ये है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का एम। ओके, और इसी में वो फोकस ज़्यादा करता है। ओके, नेक्स्ट इज the wildlife Chief Wildlife Warden act as a vice chairperson of the state board for wildlife. No, it's not a correct statement because the Chief Wildlife Warden is not the vice chairperson of the state board of wildlife. The chief minister of the state is a chairperson of the state board for wildlife and minister in charge of forest of the board, but does not hold position of vice president, सॉरी वाइस चेयरमैन। ओके, इसका चेयरमैन कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा सीएम। okay, so next statement is the child wildlife warden can grant any person a permit to enter a sanctuary for scientific research. yes, it's a correct statement। और यहाँ पे क्या पूछा, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओनली 1 and 2 is the correct answer for this question।
Next is with reference to the forest cover in India, arrange the following type of forest in increasing order of their share in India's forest cover. Okay. So first is इसमें हो जाएगा सबसे कम किस में है, सो हो जाएगा स्ट्रब फॉरेस्ट, करेक्ट. देन हो जाएगा वेरी डेंस मीन्स 1 3. देन हमारा हो जाएगा मॉडरेटली डेंस विच इज़ 4. एंड देन हो जाएगा ओपन फॉरेस्ट विच इज़ 2. सबसे ज़्यादा कौन सा है, ओपन फॉरेस्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन स्कीम, ये 4 टाइप का होता है. कौन कौन सा, तो एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसमें डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट कितना हो जाएगा, मोर देन 70%. देन होता है हमारा मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, जिसमें इंक्लूडिंग मैनग्रोव्स कवर इसमें भी आता है. एंड इसकी कैनोपी डेंसिटी कितना होती है, तो 40 to 70%. एंड नेक्स्ट हो जाता है हमारा ओपन फॉरेस्ट. ओपन फॉरेस्ट की डेंसिटी कैसी होती है, तो लगभग कितना 10 to 40. ओके, 10 to 40%. एंड नेक्स्ट वन इज नॉन फॉरेस्ट, जिसमें लेस देन 10% होता है. ओके, सॉरी, श्रब में आ जाएगा लेस देन 10%. एंड अनदर वन इज नॉट फॉरेस्ट, जिसमें एनी एरिया नॉट इंक्लूडेड इन द above क्लासिफिकेशन. ओके, और ISFR बाइनवाली रिपोर्ट निकालता है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज it is a UNESCO World Heritage Site located in Bharatpur. It is a complex of 10 artificial seasonal lagoons. It is an mosaic of dry grasslands, woodland, swamp, and wetlands. It is home to species such as painted stork, nilgai, Siberian crane. Which of the following Ramsar sites is being described in the passage given above? So ये कौन सा हो जाएगा, केवला देवखाना नेशनल पार्क, विच इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और केवला देवखाना नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, तो वो हो जाएगा राजस्थान में. एंड अष्टमुड़ी वेटलैंड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कमेंट में आप हमें बताइएगा. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज लोकतक लेक, ये भी न्यूज़ में था. ओके, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, अगर हम बात करते हैं लोकतक लेक की, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है, मणिपुर में. ओके, मणिपुर में. एंड चिल्का लेक ओडिशा में. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. उससे पहले अगर हम बात करते हैं रामसर साइट के, तो ये स्टार्ट कब किया गया था, 1971 में. और किस कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन के द्वारा. और इसमें रिसेंटली अभी 11 मोर वेटलैंड्स को ऐड किया गया है रामसर साइट में. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements. The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animal 1979. So first statement is it is an environmental treaty under the aegis of the United Nations Environment Program. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is it aims to conserve terrestrial, aquatic as well as avian migratory species throughout their range. Yes, it's a correct statement. Next is migratory species threatened with the extinction are listed on the appendix 2 of the convention. No, it's in appendix 1. Okay, so statement third is incorrect. Let's come to the next. So answer is option number B. Only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to Article 39B of the Indian Constitution, consider the following statement. First is Article 39B empowers the state to manage and distribute material resources of community
correct statement. Next is 39B allows the state to acquire any private property it deems necessary for the common good without any restriction. No, it's not a correct statement because there is determination of case by case basis whether these resources of the material resources for community use has to be decided on the case by case basis. Factors relating to the public welfare, scarcity and nature of worship ownership would dedicate the determination. Okay, so statement second is incorrect. So answer for this question is option number A, only one is correct. Let's come to the next question, which is which animal is famously known for producing one of the world's most expensive coffee, which is coffee luwak by digesting and extincting coffee cherries. Okay, so कौन सा हो जाएगा? Asian palm civet. Okay, Asian palm civet. So answer is option number B. Let's come to the next question, which is by the process by which food glucose is made by bacteria using chemical the energy sources rather than sunlight is known as chemosynthesis. Okay, कौन सा हो जाएगा? तो chemosynthesis आ जाएगा. Next is so answer is option number B. Let's come to the next question, which is the IL-35 protein recently identified by the Institute for Advanced Study of Science and Technology, गुवाहाटी. और गुवाहाटी कहाँ पे है? तो असम में. ओके, has shown promise in treating which of the following condition. तो वो कौन सा? अल्जाइमर एंड पार्किंसंस डिजीज. नो. टाइप 1 डायबिटीज एंड autoimmune diabetes mellitus. Okay, so option number B is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is in the process of ecological succession, which terms refer to the stage where the change in community lead finally to community that it is in near equilibrium with the environment. So answer for this question is option number C, which is climax stage. Okay, so let's come. Next question is with reference to the process of decomposition and action by. So first statement हो जाएगा इसमें fragmentation earthworm correctly matched. Next is mineralization bacteria catabolism. So correctly matched. So answer for this question is option number option number D. Only all three are correctly matched. So let's come to the next question, which is report has been published by United Nations Environment Program, which is UNEP, the International Methane Emission Observatory. In this context, consider the following statement. Okay, so first statement is the natural causes like volcanic eruption and wetland account for more than 80% of the total methane emission. Is it true? No, it's not a correct statement because ये हो जाएगा 40%. और अगर 60% की हम बात करते हैं तो वो मैन मेड हो जाएगा जो कि इंसानों द्वारा किया जाता है. फॉर एग्जांपल लाइक एग्रीकल्चरल, फॉसिल फ्यूल एंड वेस्ट मैनेजमेंट. सो ये सबसे इमिट होता है maximum 60% of the methane emission. Okay, so first statement is incorrect. Next, recently India signed the global methane pledge in a bid to curb the methane emission. Is it true? No, it's not correct because India इसको sign नहीं किया है. India not signed the global methane pledge in a bid to curb methanes. Okay, so answer for this question is option number A. Only one is correct. And if we are talking about the statement second, which talks about the global methane pledge was launched at the COP conference. COP conference 26 जो कि 2021 में हुआ था. कहाँ पे हुआ था? तो ग्लासगो में. ओके, ग्लासगो में. So first statement is correct. So answer is this one. Let's come to the next question, which is last question of the day.
एंड टेस्ट 18 का लास्ट क्वेश्चन है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, तभी तो सपोर्ट मिलेगा मुझे भी और करने का मोटिवेशन भी मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ रामसर साइट इज़ मैन मेड। ओके, ये चारों रामसर साइट है जिसमें से आपको ये चूज़ करना है कौन सा मैन मेड है। ओके, सो भोज वेटलैंड इज़ द मैन मेड। Okay, and if we are talking about the another one which is रुद्र सागर लेक, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? त्रिपुरा में लोकेटेड है। एंड नेचुरल सेडिमेंटेशन रिजर्वायर है विच रिसीव्स फ्लो फ्रॉम द थ्री पेरेनियल स्ट्रीम्स नेमली नौचेरा, दुर्लाव नारायण, दुर्लाव नारायण एंड नारायचेरा एंड केमताली चेरा। ओके, ये तीनों रिवर्स, तीनों स्ट्रीम्स है। ओके, एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट द लोकतक, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट रीजन का। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं चिल्का लेक के, तो ये नेचुरल ब्रैकिश वाटर लगून है, कहाँ पे? ओडिशा में। एंड geological evidence indicate that Chilika Lake was part of Bay Bengal during the last stages of Pleistocene period. Okay, so answer is option number D. So thank you so much guys, आज के लिए इतना ही। If you like the video, like, share and subscribe to my channel.